Now, can I shift to a little bit lighter questions? Sure. What you miss in UK about SMVDU? Oh, the food. These people don't know how to eat. They don't. They just eat fish and chips. They fry the fish and they eat with fries, which they call chips. They are Yeah, this I know. works, and they drink too much. I think they just just always drink, and because I want to have a conversation, I have to drink as well. Just not Yeah, like a full way drink. A pint. A pint here is just like a Pepsi or a Coke in India. So that's yeah, kind of thing. So that too. In the same time, the more fairer system it gets, the harder it gets as well. I have to yeah, agree. yes, for sure. If you It's are in a not damn easy. transparent system and it is fair, so definitely it is going to be very difficult and hard to sustain It's or not easy. manage. That is for sure. That is So for if sure. I put my energy in JRF, I make it through JRF and I make it into IIT, BITS, Pilani, or these kind. Mhm. But because there's only now less weight on the score, more weight on other things, I have to put more energy on each and everything. And maybe there will be some guy who's Olympic the swimmer, or he who have a gold medal, silver medal, and he's gonna be there, and so everything goes to boom. Yeah. Competence, it works on competence. This is not Canada, this is not Australia, this is New Zealand. This is competence. Yeah. Have it, doors will be open. If you don't have it, I don't know. I'm just trying to Yeah, I find can out understand. I what's understand. happened. So So, this kind of anything which you like about UK and UK educational institutions more than any other place in this world? Because now you have the exposure not only of India and UK, but also you might be interacting with a lot of people everywhere. Na? People have come from so many places. In fact, even the intake from Africa is also too much. I have seen in UK that lots and lots of students from Africa also come over and they also bring their cultures and their experiences as well. So, but I'm talking about, say, the other institutions of high repute all across the world. So, what is the best thing about UK? best thing. If you think you haven't seen the world, come to Europe, UK. Don't go to America. American standards are too high and too tough to go. Otherwise, you're gonna be. But if you want to go, if you there's a lot of controversies with American institution. They are better. My Stanley told me not to apply in UK. If he said this is advice, always like conversation. If I see you in a PhD, either you go to LBS or you go to America. That's he set bar for me, but it's too much for me. But however, go come to UK. It's so international. People from South America will be here. South America is some corner which nobody talks about. It's there. Brazil, It's the of course. colorful part of the world. Yes, Colombia. This still exists. Smart people, they work differently. Okay, I tell you. When I was doing this is an example. When I was doing this my course, so the societies, I know you're very engaging and you're very good supportive for in societies and extracurricular activities and those kind of stuff. UK, you have to do it. It's so fun here. There's so many things there. From my university, there are 300 societies. Every Mhm. society works, every one of them, and every one of them funded by the university and that kind of thing. And there's so many people, there's so many. I took part in, I took part in golf. Now I initially not that good player, but I want to try it, so I tried it. But to your point, so because I had already had a master's, so there was entrepreneurship society, enactus. Enactus is a society. It's not only it's in my university. Enactus is all over world. So every university or good universities or significant universities have the same societies. They have linkage between them. So and the companies offer direct jobs to that kind of society. True. If you are a member, you get in. If you're a member, you don't have to do interview. Just do the assessment or skip the assessment. Just we invite you to the interview. This also works. Mhm. So Mhm. under Enactus, there was this project Oyana, Kenya. So my project is that we were like people of 10. It's a student startup, non-for-profit charity, and our goal is to help the women in Kenya, which is in Africa, which is very poor. So what we do is we help them to make soaps. This is the
there is an idea, the previous people transferred, that they will help those ladies make soap in Kenya, and they help them to sell those local soaps to their local hotels. In that sense, which is again some good idea, and then they can at least have some little amount of money so they can nourish their children. So this was my company. This was my company's motto. So I wasn't the CFO. I was head of finance and legal. I get the position. I had the formal interview. Look, in India, if you want to get into society, just get it. But here, they want me to write 200 words of 2 questions, and then this my CEO Sarah, she was from Germany, so she interviewed me, and I told her about my ideas, and then I got in. Then after 2 weeks, she offered me more responsibilities. That how I get my position, and after that, once what happened, because I have this habit to go late, which isn't. Have you Please, ever been thrown out of the NSS because you were late to some place? Then you might remember me. yes. Now you get me out of NSS, and now I remember definitely. So and sir, you did a very good job. Tell these guys tell me you have. So in that meeting, we have formal meetings. You have to come in. You have to, just like a normal company, and we aren't a normal company. We were a company who were like £10,000 company, which was funded by the students and grants. So I sit down. I was half an hour late. Obviously, I'm embarrassed, but Half an hour late is cardinal sin, man. so Sarah, at the end of this, she didn't say anything. So there was 10 people team, marketing team was there. We have everything, marketing team, the IT team, my financing legal team, the CEO, CFO, and COO as well, the production team, product team. 10 people were there. She said at the end, everything was done. I presented what I thought, and she was very respectful. She was accepting what I say. Then she wants to say, Rajat, can I say something? Yes, please. Obviously, you're the CEO. I'm the head. You can say anything. Said, I really appreciate, it happened twice. I really appreciate if you come on time, because I don't know how it works with other part of the world, and I really respect. She really said it in front of everyone. I feel ashamed from that. And she said, in Germany, if you come late, even like 5 minutes, it's disrespectful to my time and my devotion, and I'm not gonna accept this. And I hope you will consider this. Then instead of taking as a offense because it is my fault, I wasn't late after that. That is something which I am trying to teach to students in this university or at places wherever I am working, that you cannot be late, man. And moreover, in Europe or in, I guess, so most of the parts of the world where people respect time, people consider themselves late if they are not 5 minutes early. They usually Yes. try to be 10 minutes early, 15 minutes early, Yes, so that I'm they can about to just, say it. About to say it. So yeah. And like, suppose if we are both going to some place for some interview and this and that, so I will be there 15 minutes before and I can have a chat with you. Or yes, if we are attending the class together, also I can come 15 minutes before and we can socialize as well. So that culture is there. On the other hand, here people will come 15 minutes late and they will also argue with us. Why you are throwing us I'm out? so sorry because I did. I know now what you were saying, what Joshi was trying to tell me. But here I have to do it, and you know, for that 5 minutes, 5 मिनट पहले आके जो वही टाइम होता था जिसमें मैं अपने सीईओ को, जिससे मैं उससे बात कर सकता था कि तुम कैसे हो, तुमको क्या हो रहा है, हम बात करने वाले हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं कोई. दिस इज प्रोफेशनल. उसके बाद सॉरी, टाइम नहीं होता है, टाइम बिल्कुल नहीं टाइम है. नहीं होता है. टाइम वही है जो आप थोड़ा सा पहले आके चुरा लो, बिकॉज आफ्टर दैट द वर्क स्टार्ट्स. अगर आपको बात करनी है सर, अगर आपको बात करनी है, अगर आपको जानना है, आपको चीजें देखनी है, आपके पास ये योर क्वेश्चन वाज हाउ द कल्चर इज डिफरेंट, हाउ द थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज दिस इज हाउ आई लिंक. This is how it is different. Pinpoint detail. If you don't respect their time, they will not respect yours. They will not consider you as a, then you cannot be head. You're gonna be, maybe you're not gonna be work with them. So again, the company which we earlier discussed, the cultural inclusiveness, what they're looking, the fit question, the example.
pinpoint example. You can't. So Okay. we did. So now coming to another question, which is again very interesting for people over here. Who is your favorite teacher in our university? And we can name more than one, that is for sure. And your favorite teachers in UK, and how you will rate them. Like, what are the things which has motivated or which has made you made them favorite teachers in UK and in India? Okay. In my university, because I'm not from your department. I've been not. Have you even you remember Divya Arjun? Yeah, He is my best friend. he's in architecture, right? Yes, He's here. yes. Uh-huh. So Uh-huh. he always told me about how Samantha sir, how you guys work, because still I wasn't that engaging. So he always told me about so he was very engaging. So I did little about you guys. So but again, the initiatives you've taken, the other person taken is amazing. But my close interaction from my department, Pavitra sir was great, helpful in some occasions, some occasions. However, Joshi sir, because of his recommendation, I got the 15,000 scholarship. Mhm. I had a very interesting conversation with Sanjay Mishra sir, the professor. In actually, each one of them, when I asked help, whoever it will be, they always helped. Always helped. None. There wasn't time. कभी ऐसा time आया ही नहीं. For example, there मेरा एक interview था. Yes, in 2018, I got this chance. मैं select हो गया था for the internship in Ministry of Foreign Direct Trade. Mhm. I got पूरे इंडिया में से there are so many applicants. I got selected into 20. They had a list of 20. So मेरे को अब interview देना था. मैंने कभी दिया नहीं था. तो मैम है MBA की. She's I'm forgetting her name. She Jyoti ma'am. Jyoti ma'am and Aarti ma'am. आरती मैम. So I don't know. उन्होंने मेरे को सिर्फ एक HR का सब्जेक्ट था, उन्होंने वही पढ़ाया था. पर हम बात करते थे, हम उनका काम के बारे में बात करते थे, हम निजी और चीज़ों के बारे में बात करते थे. मैंने उनको बोला, मैम थिंग इज मुझे और पता नहीं है who will be, बट आपको मुझे पता है, हम बात करते हैं. क्या आप मेरा एक इंटरव्यू ले सकती है as just for preparation? However, I wasn't selected, but they help you. These but she teachers did. help you. She did. But the point is, अगर मैं select नहीं हुआ, it's my fault. I didn't do something. But It is after, always our fault. It is always our it was fault. all fault. Because अगर तुम if you don't consider it's not your fault, then whose fault it is? और अगर तुम ढूंढ भी लेते हो, that's the second party's fault. What are you gonna do about it? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते. It's your fault. Try to make things for. So उनकी 5 बजे क्लास खत्म होती थी. Then हम MBA के नीचे डिपार्टमेंट में बैठे थे, जहाँ पे MBA फर्स्ट ईयर क्लासेस होती हैं. So उन्होंने वहाँ बैठे, उन्होंने मेरा 2 बार इंटरव्यू लिया. She pointed out things in my CV which was wrong, which was something which is insufficient, or more things to need to be added. Help. Joshi sir, help in my dissertation. I got distinction. So if I get my PhD, here there's one more thing. You need to get a distinction which is more than 70 in your dissertation. Otherwise you won't get in. अगर आप overall आपके पास है और आपको dissertation में नहीं है, तो आप one of the requirement, हम requirement पूरी नहीं कर रहे हो. जोशी sir helped me in my dissertation. So वो था, मैं पहली बार dissertation लिख रहा था, मेरे को लिखना भी नहीं शायद इतना अच्छा आता था, but he helped me a lot. उन्होंने मेरे को बुक कर बताया. कीर्ति sir थोड़े से harsh है, but is in the point. The point is, जब हम बात करते थे, उसमें से जो निकल के आता था, that's insightful. Be professional. टीचर्स का हार्श होना कुछ गलत नहीं है, because ultimately the intention is to teach. Actually मेरे some people take it the hard way, some people take it the other way. मैंने डिसाइड किया अगर मैं प्रोफेसर बनेंगे, मैं तो बहुत हार्श हूँ. मैं बन गया तो अगर मैं आ गया. We have transfused our blood to you now. तो the legacy has been transferred properly. तो मैं तो सर मतलब अगर तो मैं यूरोप में हुआ कहीं पे, और क्योंकि मैं यूरोप में भी अप्लाई, मेरे को उन्होंने बोला कि यूरोप में भी अप्लाई करो. स्कूल्स के इंडिया की तरह नहीं है कि इंडिया में IIT की एक ही ब्रांच है, IIT एक ही जगह मुंबई में. IIT सोच रहा है कि दे हैव अ कोलैबोरेशन, देन देयर विल बी अ सेकंड कैंपस एंड देन, बट यहाँ पे है कि ऑलरेडी है, और दोनों कैंपसेस की जो वैल्यू है वो सेम है, कुछ फर्क नहीं है. तो यहाँ पे एक स्कूल है, अब वहाँ पे एक स्कूल है, तो मैं यहाँ पे लंदन वाले स्कूल में उसका अप्लाई करूँगा. यहाँ पेरिस में है वो, तो वन ऑफ द बेस्ट.
तो मैं करूंगा वो अप्लाई, तो आई एम गोना बी हार्श, पता लगना चाहिए सर कि मतलब कैसा, क्योंकि सर ये इट्स मैन लास्ट में सर मेरे को, मैं अभी भी समझ रहा हूँ, these all this conversation is all under review, nothing is, maybe I'll change, maybe you know things will consider out, but तेरे को पता होना चाहिए मार्केट सर कितनी हार्श है. Yes, actually, you know what? If you keep the protective environment intact, then the student or the kid who is going to face the market will not be able to survive, because the market, the world is wild and it is so damn competitive. You will only survive if you are the best and you are the strongest, मैं or आप else they will eat you out, completely throw you out. So that is always going to be a problem. agree, मैं आपको एक complete are you complete? नहीं नहीं नहीं, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि भाई मैं मतलब बहुत बोलता जो हूँ है सर. यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. और ये जो कभी कभार क्या होता है, कभी पेरेंट्स कभी टीचर्स जो है इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, उससे क्या होता है कि द किड हैज नॉट ग्रोन इनफ, ही और शी इज इंटेलिजेंट इनफ, but since he or she has not grown enough, they are not able to face the competition in the market. And I have seen a lot of students, good students, bright students, going for a job or going for good places, and then since they cannot cope up with the environment, cope up with the say competition, they leave and they come back and वो क्या कहते हैं पता है, मुझे ना JKS का एग्जाम देना है, मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, एंड दिस एंड दैट, ये करते हैं. सर देखो, अगर आपका काम अच्छा है, you can earn a lot if money is your goal. You can be a good software engineer. My friend, I'm living with a software engineer. I think his work is good enough. He have earning like 4,000 pounds a month here. Amazing. He have a experience of 3 or 4 months. And he also have I am a double masters. He's also double masters, second masters from Cardiff University. He's earning. The thing is, अगर उनको आता है, मेरे से बड़े हैं वो, उनको आता है, आने के बाद वो वहां जब अपने सीटीओ से बात करते हैं, वो अपने स्टैंड पॉइंट से हिलते नहीं है, और जब तक उनका वो पॉइंट है. सॉरी, मैं आई वर्किंग इन प्राइवेट इक्विटी. आई थिंक दिस कंपनी इज नॉट गुड इनफ. My Stanley or my boss says, I don't think so. What are you saying? I don't agree. Okay, we don't agree doesn't mean I'm wrong. Okay, we have to put more effort. So अगर आप इस चीज से भाग रहे हो, आप फिर भागते रहो. ये गवर्नमेंट सर्विस में जो सच में जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको आप फालतू का इतना, उनके ऊपर इतना बर्डन, इतना क्यों? जो करना चाहते हैं उनको करने दो. अगर आप इस वजह से कि आप नहीं हो, तो आप, आई थिंक you improve, maybe you go to US and then you be a billionaire. तो अब गवर्नमेंट जॉब में रहोगे, अब कर सकते थे, आपने किया नहीं. गवर्नमेंट जॉब में रहोगे, इट्स लिमिटेड, हैव इट्स ओन डिमेंशन ऑफ वर्किंग. बट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आके फिर एमबीए करके फिर मार्केटिंग में जाना है, मतलब आई हार्डली क्या. आई नो एक्चुअली बात वही है कि पोटेंशियल कहीं और है, बट सिंस यू कैन नॉट सर्वाइव एंड सिंस यू हैव नॉट ग्रोन इनफ, तो फिर आप जो है वो कन्वेंशनल जॉब में चले गए, है ना. मतलब यू आर गुड इनफ फॉर एनीथिंग, बट देन योर चॉइसेस वुड हैव बीन समथिंग एल्स एंड यू कुड हैव कंट्रीब्यूटेड बेटर ओवर देयर बिकॉज योर माइंड इज वर्किंग इन दैट एरिया. बट देन यू शिफ्टेड टू समथिंग व्हिच इज कन्वेंशनल, एंड एट द एंड ऑफ द डे पता है क्या होता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास 50 लाख की जॉब है या 10 लाख. प्रॉब्लम ये है that at the end of the day, if you regret that why I decided, then it's a big pain. And believe me, the regret coming at the age of 20 is far better than the regret which is coming at the age of 45, 50. It will kill you, man. And Yes. then you will not be even able to cry, and you will not have enough of shoulders to put your weight on कि अब मैं क्या करूँ यार. कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा उस पॉइंट पे. वो चीज है, वो चीज समझ में आनी चाहिए लोगों को. Choices. It was really amazing talking to you, man. मतलब लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा, एक चीज सर, पैसे तो हैं. I earn like 1,500 pounds from my internship. I earn from right now I'm working in a private equity. So what private equity houses do is buy companies and then sell them in next 3 to 5 years, or break the companies. उसको तोड़ के मरोड़ के आप उसको दुनिया के हर हिस्से में बेच दो. हम वो करते हैं. और hopefully I get a job, hopefully, I don't know, in January in Europe. My company is based in Luxembourg.
It was so my professors and he's a partner. He will step up to a partner. I will step up to analyst. तो ये है. तो अब this is the whole journey been कि मैं यहाँ से यहाँ पे आया और आज मेरे पास 1500 पाउंड अभी से इंटर्न होने के बाद 1500 पाउंड है. 1500 पाउंड से टाइम नहीं है, पैसे हैं. अब क्या करूँ मैं उन पैसों का? This is the conversation, a real conversation I had with my father. We are from, I consider myself a normal person. इंडिया से जो आता है वो यहाँ आके नॉर्मल ही हो जाता है. है इंडिया से पैरानॉर्मल, मेटानॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल लोग आते हैं. हमारे दोस्त है, मेरे दोस्त का दोस्त है, 7,000 करोड़ की कंपनी है. उसको बोलेंगे यहाँ के ही इज रिच. बाकी कोई भी आएगा तो यहाँ के से नॉर्मल हो जाएगा. However, कि if पैसे कमा भी लोगे तो करोगे क्या पैसे? पैसे तो कमा लोगे. सच बात वही है. ये भी at the end of the day you will look for peace, you will look for friends, you will look for good time and you are not having it. मैं तेरे को एक बात शेयर करता हूँ. मैंने ये चीज बहुत बार क्लास में शेयर करी, but since you were never there in my class, so तुझे नहीं पता होगा. When we passed out from our colleges and from our schools, we had friends. We are still connected through WhatsApp and all these things. हमने पता है लास्ट 15 years से प्लान किया है कि हम एक गेट टुगेदर करेंगे और आज तक नहीं हो पाया है. और मैं तेरे को आज लिख के देता हूँ. आई विल नॉट एडिट दिस पार्ट इन दिस इंटरव्यू. मैं तुझे आज लिख के दे सकता हूँ, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा वो. दैट इज द सैड पार्ट, बिकॉज वंस यू मूव ऑन you really have to leave things behind. Does not matter how much you talk, how much you are in contact, you meet one or two, but like say 15 people, 20 people coming together and have a gala time reliving the schools and the colleges days, impossible. नहीं होगा. तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा. सिमिलरली आपने आज अगर कोई चीज़ छोड़ दी है जस्ट बिकॉज कि नहीं मैं इसमें नहीं करूँगा, मैं उसमें कर लेता हूँ, और उसके बाद आप जिंदगी में पूरी कोशिश करते रहना, आपको कभी वो चीज़ नहीं मिलेगी. एंड द चॉइस लाइड देयर because you were meant for that. Yes. ये चीज समझ में आनी चाहिए. I 100% agree. तो सर मैं तो ब्लूमबर्ग से रिजेक्शन लेना मेरे लिए गर्व है, मगर ब्लूमबर्ग अप्लाई ही नहीं करना. Stage, as you were telling me, ना, you were on the last stage. ब्लूमबर्ग में अप्लाई ही नहीं करना. और मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स जो ब्लूमबर्ग लेते हैं वो कैम्ब्रिज, जो लंदन यूनिवर्सिटीज के बहुत बड़े अच्छी यूनिवर्सिटीज के हैं वो आते हैं, या मेरी ही पैरेलल यूनिवर्सिटीज के आते हैं जो कि जिनका वेट सेम है. लीड्स हो गई, साउथहैम्पटन हो गई, मैनचेस्टर हो गई, कार्डिफ हो गई, तो यहाँ से आते हैं. तो स्टिल उन्होंने तो बैचलर्स भी यहीं से की है और कुछ ने तो सिर्फ बैचलर्स ही की है और उसका वेट ज्यादा है. मैंने फिर भी किया. आई स्टिल कुछ तो किया. और सर इंटरव्यूज जब जाओगे, असेसमेंट करोगे, पता लगेगा कि वो मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या है. मार्केट स्टैंडर्ड्स इन लोगों ने सेट नहीं किए हैं. आई विल टेल यू कि जो भी इसको अब देखेगा, मार्केट स्टैंडर्ड्स जिन लोगों ने सेट नहीं किए हैं, ये नेचुरल फोर्सेस हैं. डिमांड आती है तो अगर उसको सप्लाई करना है, उस सप्लाई को करने में जितने एफर्ट्स लगेंगे, आपको उस एफर्ट में से एक पोर्शन बांट के दे दिया जाएगा जिसका नाम जॉब है. जॉब को पूरा करोगे, कंट्रीब्यूशन होगा, वो जाके कंपनसेशन कंपनी को मिलेगा, उसमें से हिस्सा आपको देगा. This is the truth, then. This is coming from the horse mouth, huh? Harshness. अब आप बोलोगे अब मेरा बॉस हार्श है, या मेरा सुपरवाइजर हार्श है, या मेरा मैनेजर हार्श, वो अपने इंडिविजुअल सब्जेक्टिव हो सकता है. सब्जेक्टिव हर बंदा, मैं भी हूँ. स्क्यूनेस हर बंदे के इंडिविजुअल्स हैं, कुछ नहीं कर सकते. मगर जो काम का वो है वो नहीं, वो सप्लाई डिपेंड करती है. अगर तो प्रोजेक्ट है, देना है तो क्या करें. तो प्रेजेंटेशन है, उसको बना के देनी है तो कुछ कर नहीं सकते. दिन रात को 2 बजे तक बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं. मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, लास्ट एग्जांपल, क्योंकि मैंने अपने आप को समझाने, मतलब देख यहाँ आने का, मेरे पेरेंट्स का, हम वी टॉक, हम बात करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ बैठ के हम फ्रैंकली बात करते हैं कि मेरे पापा का बिजनेस है, बिजनेस में क्या होना चाहिए. मैं बात करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए. मेरी बहन लॉ कर रही है, हम उसको क्यों करनी चाहिए. मेरी मदर है, सब शी इज वेरी सपोर्टिव, शी इज वेरी इंटेलिजेंट देन माय फादर. तो उसमें यही कि ये देखो, पिन पॉइंट निकाल के लो, हमको भी पता लगेगा. हम बात करेंगे बैठ के, हमको 4 चीजें नहीं पता लगेगी, हमको भी सीखने का मौका मिलेगा, और मुझे बहुत सीखने का मौका मिला. तो एक इसमें से एक लास्ट एग्जांपल, मेरी एक दोस्त है, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली में काम कर रही है, इन कैनरी वॉर्फ यूके का. यहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, मतलब गोल्डमैन सैक और मॉर्गन स्टैनली अगर 2.3
ट्रिलियन के एसेट्स अंडर कंसिडरेशन है, उनके अंडर एसेट्स अंडर AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वो कंपनी का हेड ऑफिस वहां पे, हेड ऑफिस वहां पे। उसके बाद हर जगह, यहाँ तो वो न्यूयॉर्क में है, यहाँ तो वो लंदन में है, और बाकी के सारे इंडिया में सब ऑफिस है। अगर मुझे काम करना है मार्केट रिसर्च में, मुझे काम करना है कैपिटल मार्केट में, डेट मार्केट में, वो टीम इंडिया में नहीं बैठती, वो टीम यहाँ बैठती है। इसका ये मतलब कोर टीम यहाँ बैठती है। मेरी दोस्त काम कर रही है, वो सुबह 8 बजे आती है, रात को 8 बजे आती है। सब वो लंदन में रहती है, वो सेंट्रल में रहती है। सेंट्रल में रहने का मतलब 3 लाख रुपए महीने का खर्चा सिर्फ तो सेंट्रल में रहती है वो, और 11 बजे 10 बजे वो सो जाती है, अगले दिन वो सुबह काम पे जाती है। You really have to work like that only. तभी सर्वाइव करोगे, तभी ग्रो कर पाओगे, नहीं तो। और ये उसके सुपरवाइजर या उसके बॉस या उसने नहीं किया है, ये कंपनी डिलीवर करती है ये, तभी वो इतनी बड़ी कंपनी है। वो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 4 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, इकोनॉमी से बड़े एसेट्स हैं। तो उसको संभालना है, ऐसे नहीं। डेरिवेटिव बहुत चीजें हैं, जब आप पिन पॉइंट में जा सकता हूँ, बट और जाओगे, very complex things exist, that's how world works, otherwise world won't नहीं। ये रात को आप हम देखते हम जैसे बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं चलेगा, बिजली नहीं आएगी घर में, और ये आप कंप्यूटर्स कुछ नहीं चलेगा। ये काम करते हैं, सब कैसे काम कर रहे हैं, रात दिन भर काम करते हैं, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, LGBT हो, every respectful standards are same for everybody else, prepare for the standards, lose everything else। अगर फेल भी हो गए तो मैं तो हो ही रहा हूँ, देख लो। But it's satisfaction। करा तो था। चल यार, it was really fun, है ना? But it was, believe me, it was an amazing interview. Look, whatever I say will not matter when it is coming from somebody who is having the first-hand experience. It matters. Therefore, हम ये interviews या ये सारी चीजें भी कर रहे हैं ना, so that we can, and moreover, students feel inspired when they see कि हमारे senior भैया या हमारे senior दीदी या हमारे senior sir या मैम इन्होंने ये किया है, and this and that, so we can also do it, है ना? हम as teachers उनको बताते रहते हैं ये कर वो कर, but उसका उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कोई अगर जो सीनियर रहा है, देखा है उन्होंने। क्योंकि ना दोस्त पढ़ाएगा तो समझ आ जाएगा, प्रोफेसर पूरा साल बोलता रहेगा मेरे को क्या है। पीछे बैठा हूँ, तब भी पेन से खेल रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्तों को मैं ही इकोनॉमिक्स में जो थोड़े लास्ट में हो गए थे, तो मैं ही करता था। तो वो क्लास में करते थे तो नहीं, अब मेरे से पूछेंगे आके, मतलब, और मैं भी उनसे, मतलब पूर्विक से मैं पूछता था, पूर्विक मेरे को ये समझाइए कैसे होता है। क्लास में नोट्स खोलेगा, क्लास में उसने समझाया, थोड़ा सा मैं भी ऐसे ही हूँ, it's just how it is, but really I really appreciate it, really, you know, मेरे को ऐसा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। This is the first time I've ever been through, so this is the reality I've seen, मैंने आपके सामने रख दी। If hope कुछ को इस्तेमाल करे, और नहीं तो कुछ इसमें बदलाव करे या हमको भी बताए और कैसा हो सकता है। मैं जानने के लिए हूँ कि और क्या तरीके हैं जिससे हम इसको, हम बहुत बड़ी पेन है रहना, खाना रहना, कोई जॉब कम कर सके, क्या पता। So I really appreciated your time. आपने I really appreciated yours as well. Thank you so much. Thank you so much, Rajat. really, you're a very good professor. I hope कि आपकी research, आपके whatever your professor in your university will pay off some yield. Otherwise, thank you so much, है ना?